हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इस चैप्टर का बाकी और जो बचा हुआ एक्सरसाइज है वो सॉल्व करूंगा। आज के मैं सेशन में 2.3 एक्सरसाइज के जो 5 क्वेश्चंस है उसे मैं सॉल्व करूंगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स हैज़ 500 in her saving bank account. She get 150 every month as a pocket money. How much money will she have at the end of every month? From the second month onward, find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 500 उसके अकाउंट में सेविंग मनी के फॉर्म में उनको दिया जाता है। तो सेविंग अमाउंट कितना हो जाएगा? सेविंग अमाउंट हो गया आपका 500। क्लियर। आगे बोला गया है 150 रुपीज़ एवरी मंथ पॉकेट मनी। तो एवरी मंथ फॉर पॉकेट मनी ₹150। ओके, नाउ हाउ मच मनी विल बी एंड ऑफ एवरी मंथ? दैट मीन्स एवरी मंथ इसे मिलेगा, तब इसके पास कितने पैसे होते जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट मंथ का, मतलब चलिए अब फॉर फर्स्ट मंथ के लिए क्या हुआ, 500 रुपीज़ इसे तो मिला भाई पॉकेट मनी, प्लस इसे कितना मिला, 150 रुपीज़ मिला। दैट मीन्स कितना हो गया इसके पास, 650 रुपीज़ हो जा रहा है। सेकेंड मंथ के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 रुपीज़ तो मिला। अब तो इसके पास पिछला महीना 150 मिला था 150, एंड नेक्स्ट मंथ वंस अगेन विल रिसीव 150 रुपीज़। दैट मीन्स 2 into 150 रुपीज़, that means 500 plus 300, that means 800 rupees. Now for third month 500 rupees plus 3 into 150, that means 500 rupees plus 450, that means 950 rupees. Onward same. So now find a linear expression to represent the amount she will have to in the nth month. Now for nth month linear expression in the form of, that means first deposit we will receive 500 plus, that means 1 month, 2 month, 3 month, that onward nth month. So we will conclude that 500 plus 150n, that means 150n plus 500. That is the answer of your linear expression in the represent in this form of, sorry, okay, clear, nth order. Clear. So now you take screenshot or note down quickly. So now more questions, 4 more questions in the exercise. So now next questions. A rally start with 120 members. One rally start 120 members. Each hour 9 members drop out in the group. Suppose that one rally start at a time and 120 members. So now after
1 hours 9 members drop out, then after 1 hours again 9 members drop out. So similarly 1 hour, 2 hour, 3 hours, find a linear expression to represent the number of member at the end of the nth hour. So now we will solve second question. Now first total number of member 120, every hour dropout of member 9 member. So for first hour 120 minus 9, that means 1 1 1, and second hour 120 minus 2 into 9, 120 minus 9 2s are 18, 102. In third hour 120 minus 3 into 9, that means 120 minus 27, 3 9. Now similarly onward nth hour. So now nth hour 120 minus n into 9. So we will conclude that 120 minus 9n, hence linear expression to represent the number of member at the end of nth hour is equal to 120 minus 9n. आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे. क्लियर है? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. Third number question. Suppose the length of a rectangle is 13 centimeter. Now a rectangle length is 7 centimeter and breadth is length is 13 centimeter. Find the area if the breadth is first number 12 centimeter, second number 10 centimeter and third number 8 centimeter. Find the linear pattern representing the area of the rectangle. Length is equal to 13 centimeter. What is the formula of area? Area is equal to length into breadth. So now first solution, B is equal to 12 centimeter. So now area of a rectangle is equal to length into breadth, that means 13 into 12 is equal to 156 centimeter square. Now second, B is equal to 10 centimeter.
area of rectangle is equal to length into breadth, that means 13 into 10 is equal to 130 centimeter square. Now third, B is equal to 8 centimeter. Now area of rectangle is equal to length into breadth, that means 13 into 8, 104 centimeter square. So now you can observe that 13 into 12, 13 into 10, 13 into 8, that means that number will be changes, that means breadth, the value of breadth will be changes in every questions. So we conclude that the linear pattern of area of rectangle is equal to 13 into breadth, that means 13B is the answer. I hope you will understand clearly. So now move on next question, 4 number. Suppose the length of a rectangular box, that means rectangular box 7 centimeter breadth, length of the rectangular box is 7 centimeter and breadth 11 centimeter. And the height is 5 centimeter, 9 centimeter and 13 centimeter. Okay. Length is equal to 7 centimeter, breadth is equal to 11 centimeter. So now volume of box is equal to length into breadth into height. So now first question, 5 centimeter our height is equal to, so volume is equal to length into breadth into height, so 7 into 11 into 5, that means 385 centimeter cube. Now second question, h is equal to 9 centimeter. So now volume is equal to length into breadth into height is equal to 7 into 11 into 9. So now 693 centimeter cube. Third number, h is equal to 13 centimeter. Volume, length into breadth into height is equal to 7 into 11 into 13 is equal to 693 centimeter cube. So now we can observe that
7 into 11 same, 7 into 11, 7 into 11. In this pattern will be same, but the 5, 9 and 13 will be changes. So the linear pattern is linear pattern of volume is equal to 7 into 11 into h. So 77 h will be a right answer. I hope आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे. Move on. Next question. You will take a screenshot. Sarita is reading a book of 500 pages. Now total number of pages 500. Now she read 20 pages every day. She read every day 20 pages. Sorry, 20 pages. How many days will be left after 15 days? After 15 days, Sarita read (20 into 15), that means 300. Remaining pages 500 minus 300, 200 pages will be remaining pages. So now express this as a linear pattern. So now linear pattern 500. एक दिन में ये कितना पेज पढ़ रही है भाई? 20 पेज पढ़ रही है. तो चलिए 20 पेज एक दिन में ख़त्म करेगी. बाकी बचा कितना हमारे पास आ जाएगा? नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू n. लेट नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू n. एक दिन में ये 20 पेज ख़त्म करेगी तो कितना बचेगा भाई? तो वो माइनस कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 500 माइनस 20n. दैट विल बी आंसर. सो आई होप आप अच्छे से समझ सकते होंगे. और इसी तरह का पूरा एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 मैं ख़त्म कर चुका हूँ. आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर लीजिए. आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. इससे रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड मैं 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, 2.1 एंड 2.2. यदि आप नहीं देखे हैं तो विज़िट कीजिए हमारे चैनल पे, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा. आप आसानी से समझ सकते हैं. थैंक यू.